Hi guys, I am Shivam Mehrotra and I welcome you to my stock market analysis channel. This is the video of budget 2023 part 2. And as we discussed in our last video about real estate sector, that how our government will be focusing on and how these three sectors are very according to probability इन तीन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा चांसेस हैं. सो दोस थ्री सेक्टर्स वर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस सेक्टर. हमने रियल एस्टेट डिस्कस कर चुके हैं जिस पर हमने तीन स्टॉक्स भी डिस्कस करे. एज आई सेड, माय ओनली फोकस ऑन दिस स्टॉक इज नॉट ओनली कि मैं सेक्टर वाइज पिक करूं कि गवर्नमेंट किस जगह पे इंप्लीमेंट करने के लिए देख रही है. ऑल्सो एज ट्रेडर वी हैव टू फोकस ऑन स्टॉक. सो दोस थ्री स्टॉक्स वर डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड ब्रिगेड एंटरप्राइजेस. नाउ our second sector that is would be in focus in this budget, and according to my plan I see that in automobile sector EV are rolling at a fast pace because there is a vision set by a government or by some superiors that they think by 2025 they all think that they should see EV on road. But before that a planning should be there. As we plan in stock market, government also plan for everything they do. So government is expected to start PLI scheme for battery manufacturers. The reason is because EV expensive है, एंड अगर PLI स्कीम स्टार्ट होता है तो जितना कॉस्ट पे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स बैटरी बेच रहे हैं उससे कम दाम पे बेचेंगे, एंड दिस विल लीड टू इनडायरेक्ट कॉस्ट कटिंग एट द एंड, लाइक cost going lower of the EV car. Also, they are there is also lithium batteries का रिसाइकल भी फोकस पे होगा. एंड इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज लिथियम बैटरी, आई वुड रिकमेंड कि पहले आप लिथियम बैटरी के बारे में जानो, एंड आई विल बी गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ दैट. सो बेसिकली लिथियम बैटरी हेल्प्स एन ईवी टू रिचार्ज. ओके, एंड उसका अगर लिथियम बैटरी का रिसाइकल होगा तो दिस वुड लीड टू रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ द ईवी कार. एंड एट द एंड जो हमारी नॉर्मल कार है एंड ईवी कार का रेट बैलेंस पे आ जाएगा. And that's the reason it would lead more buyers to come in to step in and buy those EV cars, so that जो उनका vision है 2025 EV on road वो पूरा होगा. So there are two stocks that are focused on, and that are Tata Motors and Motherson Sumi. Okay, so let's go on Tata Motors analysis. So right here we can see that Tata Motors ने last trading session में एक gap up opening करा था and एक अच्छा bullish candlestick बनाया था. And if I check volumes are also great. Heavy volumes were there. Okay, now just closing the volume bar right now. Okay, now अगर Monday Tuesday के day पे थोड़ा sideways open होता है या if it gives a breakout up till this area 459.20 and entry opportunity is there, and I would recommend you to buy it on a retest, or if you're buying on a breakout go with 50% of your entry investment and then the rest 50 on retest. So after breakout from 459.20, our first target would be 472.50. एंड अगर साइडवेज में होता है 443.10 पे तो हमारा इसके अराउंड का इन्वेस्टमेंट, इसके अराउंड की एंट्री लेंगे, बिकॉज इधर से ही फेक आउट हुआ था. एंड एंट्री शुड बी अबव 443.10. एक मस्ट है पॉइंट, आप अपने नोट्स में लिख लो या वीडियो को पॉज करके ये लेवल्स को मार्क आपको अपने चार्ट पे करना है. Okay, so entry above 443.10 and first target would be 458.90, and your second target is, as I said, 472.50. Now coming to our second stock, that's Motherson Sumi. So now here's a magic right here. By name is Samvardhana Motherson International Limited. आप भी एक बार इस नाम को देख लेना बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी हुआ था, आई गेस आपको भी होगा, एंड नहीं होता तो वेरी गुड. नाउ वी कैन सी दैट इट इज फॉर्मिंग अ चैनल पैटर्न और राइजिंग चैनल है, और जब भी इसने लोअर लाइन से सपोर्ट लिया है दैट मीन्स दिस लोअर लाइन इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड दिस अपर लाइन is an important resistance. So any candlestick, bullish candlestick structure on this lower line will be an entry opportunity, and a first target would be this upper line. And we can also see that ये 200 EMA हमारा जो dynamic resistance है वो भी नीचे आ रहा है. तो अगर इसके नीचे क्रॉस करता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसके अराउंड फर्स्ट टारगेट करें, थोड़ा बुक कर लें. एंड अगर इसके इस लाइन के ऊपर ही ये
200 EMA रहता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो हमारा इसी लाइन को टच करते ही होगा, जो कि अराउंड 81.20 या 81.50 के अराउंड होगा. So this was all about automobile sector. Let's go to our last sector, that's defense sector. Okay. Now, in defense sector, we can see that year on year government is expected to increase budget by 15%. You know the reason? The China-India factor. We all know that there would be a war situation, and if it is, any country would be focusing on the defense sector, and that's why defense sector is the most prominent sector in this budget, because government 15% तक allocate और होगा. एंड इसका रीजन ये है कि वी हैव टू गेट मोर रिसोर्सेज विद अस, सो दैट अगर वॉर का सिचुएशन होता है या अगर एनी सच circumstances is there where we have to use our defense equipment, so we have full-fledged equipments. Okay. Now, the stocks to focus on are two. There are two stocks, that is HAL and MTAR technology. So let's go on part and let's see our HAL. That's Hindustan Aeronaut. Okay. Now, first of all, I would come on 4 hour time frame and see the magic. See, it's on 200 EMA. And we all know that 200 EMA एक important EMA है, एक important dynamic support है, and also we can see that this green zone जो हमारा important support zone है, that is 24.90, 2409.15 is an important support area, and combining 200 EMA with this support becomes a point of conviction, because इसके नीचे का SL would be a planned SL, and every analysis is planned, but this would be an entry conviction point, because which let us know कि इसमें स्टॉक के मूव आने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर, बिकॉज दो स्टॉप्स हैं इधर रोकने के लिए उसको. ओके. अगर आपको इसके अराउंड की कई एंट्री मिलती है, जैसे कि 2470 के अराउंड तक मिलती है, तो आई वुड रिकमेंड टू बाय दिस स्टॉक. रीजन हमने अभी डिस्कस करा है. हमारा पहला टारगेट होगा 2551.50 एंड द सेकंड टारगेट इज 2575.05. जैसे कि मैंने बोला कि अगर बजट में इसके ज्यादा चांसेस हैं सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये स्टॉक भी फोकस में होगा, जाहिर सी बात है. तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारा एक टारगेट और वेट है कर रहा है 2659.05. so this would be a good investment opportunity for every trader like me. Now coming to our last stock, that is MTAR Technologies. So this also on 4 hour time frame, and see one thing you all can see that जो भी मैंने अभी सेक्टर बताया है या जो भी तीनों स्टॉक्स या दो स्टॉक्स मैंने हर सेक्टर में बताए हैं, तो उनका एनालिसिस काफी हद तक सेम है. एवरी स्टॉक इज फॉर्मिंग सेम चार्ट स्ट्रक्चर एट द एंड. तो तीनों का एनालिसिस सेम है, एंड दिस becomes an easy analysis and easy learning for all of you, ताकि आप स्ट्रेस फ्री जाओ मार्केट में, एंड आपके पास एक ही काइंड ऑफ स्टॉक पिक्स है, एक ही सेक्टर के स्टॉक पिक्स हैं, इनफैक्ट नॉट एक, तीन सेक्टर के स्टॉक पिक्स हैं आपके पास. So now coming back to our MTAR technologies on 4 hour time frame, and we can see that it is taking resistance from this area, that is 1720.65, and also 200 EMA का डायनेमिक सपोर्ट भी चल रहा है नीचे रेड लाइन. ओके. अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारा पहला टारगेट है 1781.85 and the second target is 1823.90. I hope you all have marked these levels, and if you haven't, पॉज करो वीडियो को, ये लेवल्स को मार्क करो, बिकॉज बजट वाले दिन, बजट से पहले वाले दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, these are very important levels that you should focus on. And if you are new to this channel, I would recommend to subscribe this channel for more such analysis and leave a like, so that it let us know that whatever hard work we are doing, is it reaching to the prominent audience or not. Up till then, this was the end of the video. Thank you guys. Bye bye, and see you in next video.